हाय फ्रेंड्स, तो मैं आज आपको मेरा रूम टूर कराने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये है मेरा रूम और आपको दिख रहा होगा ये एकदम कंडीशन इसका बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे मैंने जो भी चीज़ें रखी है एकदम बहुत ही ज़्यादा गंदा दिख रहा है। तो मुझे आज ये वाला रूम सही करना है, तो मैं इसको ठीक करता हूँ। There's a beauty in the way you're worn and the sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfections. In the pain there's something real, all that anger so concealed. Still you're lost in how to feel, just let me hold that severed heart. The pieces still so cold. All the tears won't bring it back to life, but hate will always grow. There's a beauty in the way you lay and the way your color fades. You stand out now with your imperfections. Oh, it was never meant to fall apart. It was not supposed to cause us harm. But these days, all I do is wonder, is about another we could start again. 'Cause in the pain there's something real, all that anger so concealed. Still you're lost in how to feel, just let me hold. Oh, that's severed heart. The pieces still so cold. All the tears won't bring it back to life, but hate will always grow. There's a beauty in the way you're worn and the sharpness of your thorns, so vibrant in the imperfections. In the pain there's something real, all that anger so concealed. Still you're lost in how to feel, just let me hold that severed heart. The pieces still so cold. All the tears won't bring it back to life, but hate will always. तो गाइस, मैंने क्लीन कर लिया है मेरा ये वाला रूम। तो अभी ये कुछ ऐसा दिख रहा है, आप देख सकते हो। कुछ ऐसा खास अभी इसमें कुछ ऐड नहीं किया, बस जो मेस्ड अप हुआ पड़ा था वो उस रूम को ओनली सिर्फ ये वाला हिस्सा मैंने क्लीन किया। अभी ऑपोजिट वाला थोड़ा क्लीन करना बाकी है। अभी ये थोड़ा सा इस तरीके से है, इसको मैं आज नहीं करूँगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करके दिखाऊँगा। और अभी मेरे वर्क स्पेस में थोड़ा सा मेरे को थोड़ी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, तो मैंने इसको तो साफ़ कर लिया है।
जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मैं अपना पूरा वर्क कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे को लिखना होता है, स्क्रिप्ट वगैरह लिखना होता है। तो ये वाला क्लीन हो गया। ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है और इसमें मेरा कुछ और काम होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल और ये मेरा iMac है, इसमें मेरे को काम पड़ता है एडिटिंग वगैरह का। तो अभी मेरा फ़िलहाल इतना सा हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको देखना है। सो तब तक के लिए गुड बाय।